तो बेसिकली ना मैं विलियम जोरी का चैप्टर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का पढ़ा था, तो मैं ना वो ही एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जितना मेरे को समझ में आया। या स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस विजिबल। ओके। सो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे अपन रेजिस्टिविटी मेथड में और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म में वहाँ पे क्या होता है कि अपन एक लेटरल वेरिएशन देखते हैं, और वहाँ पे एक साउंडिंग के साथ में वर्टिकल वेरिएशन देखते हैं। सेम यहाँ पे भी वही करते हैं अपन, लेटरल वेरिएशन भी देखेंगे और साउंडिंग जो मतलब वर्टिकल वेरिएशन भी अपन देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि वो एक एक वो मेथड आता है स्लिंग ग्राम मेथड या हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, एक होता है मैग्नेटोलॉजिक मेथड इस साउंडिंग से। तो मतलब ऑन एवरेज अपन वेरिएशन दोनों ही देखते हैं, इसमें भी लेटरल वेरिएशन हो गया, साउंडिंग में तो वर्टिकल वेरिएशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे में, जैसा कि अपन ने रेसिस्टिव मेथड में देखा था। उसके बाद कि वहाँ पे अपन ने आर्टिफिशियल सोर्स का वो यूज किया था इलेक्ट्रोड के फॉर्म के साथ में करंट का। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करेंगे, मतलब ये भी ना अपन क्या करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स का यूज करते हैं इसमें भी। दोनों में क्या सिमिलरिटीज है दोनों में। उसके बाद बेसिक थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है ना, मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं इसमें। गिवन है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी वेक्टर, वो सब बेसिक थिंग। माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। फोर्थ इक्वेशन इज दैट म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस, तो द बेस तो व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल, तो ये सब इंडिकेट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज से इंड्यूस होती है और चार्ज पे खत्म हो जाती है, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो सब ये कुछ बेसिक थिंग्स है। उसके बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करते हैं वैक्यूम में, तो उसका जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसका ये सब कुछ गिवन है। उसके बाद जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में फ्लो करते हैं, उसका इक्वेशन इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये सब चीजें, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट को इंडिकेट करता है, और ये सब क्या वो कंडक्टर को। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेरिएशन दे रखा है कि वेवलेंथ के फॉर्म में, ये क्या गामा रे के लिए, एक्स रे के लिए हो गया 10⁻10 की एटॉमिक मास, एटॉमिक जो एटॉमिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एटॉम में, तो उसका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम की रेंज होता है। उसके बाद में ये सब कुछ दे रखा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो अपन यूज करते हैं फ्रिक्वेंसी को 10⁴ हर्ट्ज की फॉर्म में करते हैं। मैग्नेटिक टेलरिक के लिए अपन जो फ्रिक्वेंसी होता है 10⁻2 थोड़ा लो, तो तभी इसको अपन क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा होती है इसकी मैग्नेटिक टेलरिक की इन कंपेयर। उसके बाद में एक यहाँ पे एक फैक्टर आता है मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नीट्यूड रेशियो। वो क्या इंडिकेट करता है, जैसे कि ये जो टर्म होती है ना, ये टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट करंट को इंडिकेट करती है, और ये जो टर्म होती है वो करती है कंडक्टर को, जो कंडक्टिंग है कंडक्शन को इंडिकेट करती है। तो ये अब अपन को पता है कि जो सॉल्यूशन होता है प्लेन में इक्वेशन होता है कि पावर की आठ की पावर के वाई ओमेगा टी, अपन इसका डेरिवेट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो जब मैग्नेटिक रेशियो 2 पाई ओमेगा नोट एप्सिलॉन आर अपॉन आर सिग्मा। तो बेसिकली ये ना, इसका वैल्यू यदि लेस देन 1 होगा तो ये कंडक्टर को इंडिकेट करता है कि बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, उसको इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड रेशियो को, कुछ प्रॉपर्टीज है। और यहाँ सब ये सब कुछ गिवन है इस पैराग्राफ में। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें। जैसे इसमें होता कैसे है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है कि अपन ने क्या आर्टिफिशियल प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया, प्राइमरी ईएम वेव। और अपन अज्यूम किया कि जो अर्थ के सब सरफेस में क्या है कि ओरे बॉडी है, कंडक्टिव कंडक्टिव बॉडी है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर अर्थ के अंदर इंसर्ट किया हो, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, वो क्या होगा,
उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और उसके अंदर एक दूसरी जो सेकेंडरी करंट मतलब ईडी करंट जनरेट होगी, उसे बोलते हैं ईडी करंट। और उसके कारण क्या होगा, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, उसको अपन जो अपने पास रिसीवर है उससे रिसीव कर लेंगे। तो अपन देख लेंगे जो प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें जो फेज में क्या चेंज हुआ है और एम्पलीट्यूड में क्या चेंज हुआ है, वो इंडिकेट करेगा कि अर्थ के सब सरफेस में और बॉडी कंडक्टिव मीडियम कंडक्टिव जो बॉडी है वो है या प्रेजेंट है या नहीं है, उन दोनों के फेज के डिफरेंस में और एम्पलीट्यूड के डिफरेंस में। वो यहाँ पे दे भी रखा है कि ये सब चीजें तो बेसिक बेसिक चीज ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस टाइप से अपन मेजरमेंट करते हैं फील्ड में। और उसके बाद में ये डिस्टेंस दे रखे हैं, जैसे कि अपने पास में कि ये ट्रांसमीटर है जो इलेक्ट्रिक वेव को ट्रांसमिट कर रहा है, ये अपने पास रिसीवर है। इन दोनों के डिस्टेंस से अपन क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे वहां पे अपन ने किया था रेस्टिंग मेथड में, करंट इलेक्ट्रोड की स्पीड को इंक्रीज करके डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो करंट है वो लोअर डेप्थ में मूव कर रही थी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। जैसे अपने पास ट्रांसमीटर कोयल है, एक रिसीवर कोयल है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करके अपन हाई डेप्थ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स में क्या होता है कि ये जो वो है जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इन कंपेयर स्मॉल होती है। तो जो ये ना ये जैसे कि ये क्या डिपेंड कर रहा है कि ओमेगा ओमेगा पे डिपेंड करेगा, यदि अपन इसे डेरिवेट करेंगे तो। और जो डेल स्क्वायर जो डिस्प्लेसमेंट करंट वो इक्वेशन आती है वो क्या ओमेगा स्क्वायर की। वी कैन क्या उसमें नेगलेक्ट कर देते हैं इसके इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स में क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी स्मॉल होती है, तो अपन क्या करते हैं इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, स्किन डेप्थ। तो बोल रखा है कि जो स्किन डेप्थ है वो कंडक्टर की जो आउटर मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी एट इस पर्टिकुलर डेप्थ पे क्या उसका जो एटेन्यूएशन इतना मतलब 37% रह जाता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू का। तो वो सब स्किन डेप्थ वो इंडिकेट कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें है नहीं, ठीक। हम्म, उसके बाद जैसे अपन ने वो जो मेजर किया ना, मतलब वहां पे जैसे कि अपन ने अपने पास ट्रांसमीटर है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊं क्या या फिर? हेलो। हाँ पवन। ये जो दे रखा है डेरिवेशन वो भी एक्सप्लेन करूँ क्या या फिर? हाँ, इफ यू वांट यू कैन। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ना होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। ये की क्वेश्चन होती है, ये अपन ने क्या किया, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ये जो अपने पास में एक ट्रांसमीटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीवर है अपन रिसीव करेंगे, और ये अपन अज्यूम किया कि एक कंडक्टर है। और इसके क्रॉसपोंडिंग जो अपन ने जो डाटा जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं पोटेंशियल फॉर सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पोटेंशियल फॉर प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके रेशियो में अपन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है। और ये जो है ना वो नेगेटिव यहाँ पे इंडिकेट ये करा कि मैं भी बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि नेगेटिव क्यों है, बट जैसा कि अपन को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण डी फाइव डी। वहाँ पे वो नेगेटिव नेगेटिव साइन के कारण हो सकता है मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। तो जैसे कि अपन बात करें कि यहाँ पे जैसे कि अपन जैसे जो अपने पास में ये सिस्टम है, इसको यदि अपन इसको मूव करवाएंगे तो क्या होगा, डीके हो रहा है। चेंज जो जो भी इसमें जो सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोटेंशियल रेस्पेक्ट में जो प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके रेस्पेक्ट में क्या डीके है। जैसे जब हम पास आ रहे हैं तो क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी होगी वहां पे क्या होगा, नेगेटिव अपन को मिलेगा, नेगेटिव पीक मिलेगी अपन को। और यहाँ पे क्या है बोल रखा है कि इन फेज और क्वार्टर फेज। इन फेज मतलब करता है कि दोनों ही सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, फेज में हो प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो यहाँ पे ड्रॉ जो जो हैवी लाइन है वो ड्रॉ कर रखी है। और क्वार्टर फिर बोल रखा है कि आउट ऑफ फेज, जब सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आउट ऑफ फेज है इन कंपेयर टू द प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस टाइप से अपन को एनोमलीज मिलती है, और उनका जो अपन कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, और पोटेंशियल का मेजरमेंट इस टाइप से करते हैं अपन, जो फॉर्मूला है ना उसमें।
उसके बाद में इलेक्ट्रोमैटिक जो सर्वे है वो एयरबोर्न के लिए भी यूज़ करते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है सब कुछ ना, एयरबोर्न के लिए अपन यूज़ करते हैं इन जनरल। और यहाँ पे एक मेथड होता है कि जो जैसे इलेक्ट्रोमैटिक सर्वे में जो लेटरल वेरिएशन को अपन मेजर करते हैं ना, उसको इस मेथड से अपन यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इसका जो नाम है सिलिंग्राम रोन का एक नाम है, वो जो डायग्राम में दे रखा है वो यही मेथड है कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन किस टाइप से हुआ है अर्थ सरफेस में। जी, जी, कि जो अपने पास सिस्टम है इसको इस टाइप से मूव करवाएंगे। तो अपन को मेजर जहाँ पे नेगेटिव एनोमलीज मिली है अपन को पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग, अपन अपन अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडक्टिंग मटेरियल है। उसके बाद में उसके बाद हाँ, वो ये बहुत ग्रेटर द सेपरेशन ऑफ दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर द डिप इज मैक्सिमम। सेम प्रोसेस वहाँ पे जैसे अपने जो करंट इलेक्ट्रोड था रेजिस्टिविटी मेथड में इंक्रीज किया तो क्या था, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज हुई थी। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, रजिस्टर वो अपने पास ट्रांसमीटर है या रिसीवर है, उन दोनों का जो सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी इंक्रीज होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। सो उसके बाद में वो तो हो गया लेटरल वेरिएशन हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ में, या सिलिंग्राम रोनिका में अपने देखा था। ये होता है मैग्नेटोलॉरिक साउंडिंग, ये वर्टिकल वेरिएशन देखता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, इसमें क्या करते हैं, ईडी करंट का जो ईडी करंट होता है, टेलुरिक करंट होता है, उसके कंपोनेंट को मेजर कर लेते हैं। उससे टेलुरिक करंट के जो कंपोनेंट होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को मेजर कर पाते हैं। उससे अपन को रजिस्टिविटी और जितना जो जहाँ पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वो मिल जाता है। ये फॉर्मूले में यूज। उसके बाद में इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इस टाइप से, मतलब बहुत लो फ्रीक्वेंसी होता है तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा होता है इन जनरल। उसके बाद में आता है ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार। इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो वीकेंड क्या है, उसमें कि जो डेल्टा ई अपॉन जो टी टर्म था, कंडक्टिंग जो टर्म था, उसको अपन नेगलेक्ट, क्योंकि जो डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे और इसकी ओमेगा स्क्वायर पे, अपन इसके कंपेयर में इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना है वो क्या है, वेव इक्वेशन बना है। तो बेसिकली वेव इक्वेशन बना है तो अपन क्या है, उसमें जो मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि वेव इक्वेशन है, वेलोसिटी है वो क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्री स्पेस में मूव करेगी तो उसका जो वेलोसिटी है ओमेगा नॉट सी के। सॉल्यूशन इस टाइप से होगा इसका। और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसकी, ये दे रखा है इसमें। यही कुछ बेसिक कुछ था इसमें। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अर्थ की बात करें, जो अर्थ का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका हम वेरिएशन कैसे मेजर करते हैं। तो इसके जो चार, जैसे अपन को पता है, यहाँ पे देखा है कि जो फिजिकल मैग्नेटिज्म ऑफ कंडक्टिविटी इन सिलिकेट रॉक्स इज सेमी कंडक्शन। जो सेमी कंडक्शन तीन टाइप से होता है, वन इज द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सेमी कंडक्शन, सेकंड इज द इम्प्योरिटी सेमी कंडक्शन, और थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेमी कंडक्शन। तो इन इन जो सेमी कंडक्शन प्रोसेस, तीन प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक सेमी कंडक्शन, इम्प्योरिटी सेमी कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेमी कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल सेमी कंडक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिस पे होता है करंट का। इम्प्योरिटी में जैसे अपन बात करें कि इम्प्योरिटी मिल जाती है सेमी कंडक्टर में, जिसके कारण भी एक करंट का कंडक्ट वो फ्लो होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब फ्लो ऑफ आयंस के कारण जो करंट का फ्लो है वो है। सो ये सब चीजें हैं जो सेमी कंडक्टर में अपन देखते हैं। कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ में, और जो एनर्जी है एक्सेशन एनर्जी के साथ में ये है। उसके बाद में यहाँ पे चीजें है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अपन क्या है, फोर पैरामीटर पे डिपेंड करती है वो डेप्थ के साथ में। वन इज दी क्या होगा, डीप इलेक्ट्रॉनिक साउंडिंग के साथ, एक जो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन के साथ में, एक सेकुलर वेरिएशन होगा, एक एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होगा। तो इनके साथ में वेरी करती है कंडक्टिविटी। जैसे अपन ड्रॉ करेंगे कंडक्टिविटी का, तो ये सब जो चार पैरामीटर ना वो डिपेंड करते हैं। जैसे अपन बात डीप इलेक्ट्रॉनिक साउंडिंग की अपन बात करते हैं, डीप इलेक्ट्रॉनिक साउंडिंग में क्या मैग्नेटिक टेलुरिक की बात करते हैं। वो क्या करती है, जैसे कि मैग्नेटिक टेलुरिक से अपन डाटा कलेक्ट किया और उसका अपन कंपेयर करते हैं सिस्मिक डाटा से।
और वहां से क्या क्या होते हैं कि कंडक्टिविटी को अपन मेजर कर पाते हैं मैग्नेटिक टेलीग्राफ मेथड से। एक तो ये है। उसके बाद में जैसे कि जहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो मिली सेकेंड से 2 डेज, मतलब जो वहाँ पे जो टाइम, जो 2 दिन के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया है, उसका अपन मेजरमेंट करते हैं कंडक्टिविटी का। और यदि टाइम स्पेक्ट्रम ज्यादा हो, जैसे जियोमैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन के कारण जो कंडक्टिविटी में जो चेंज हुआ है उसको अपन मेजर कर पाते हैं। और लॉन्ग पीरियड ये अपन जियोमेट्रिक वेरिएशन को अपन लगभग 2000 किलोमीटर तक के डेप्थ के साथ कनेक्टिविटी का वेरिएशन हुआ है उसको अपन मेजर कर पाते हैं। यदि टाइम पीरियड ज्यादा हुआ तो 2000 किलोमीटर के डेप्थ के साथ में जो कंडक्टिविटी का वेरिएशन है वो अपन मेजर कर पाते हैं। उसके बाद में सेकुलर वेरिएशन भी के कारण भी कनेक्टिविटी में चेंज होता है। और एक होता है ये एक्स्ट्रापोलेशन लेबोरेटरी का। अपन बात करेंगे होता है तो क्या एक्टिविटी में चेंज होगा। यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है, इन जो चारों के फैक्टर वहाँ पे इंडिकेट है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो ग्राफ ए वन 1957 में मेजर किया गया था कि जो एम, ये जो कंडक्टिविटी वेरिएशन इस टाइप से। बट यहाँ इसमें क्या है, सेकुलर वेरिएशन भी होता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण वेरिएशन हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चेंज हुआ है। उसके बाद अपन ने मेजर किया जो यहाँ पे 1969 में P69 मॉडल है उससे। देखो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी का वेरिएशन किस टाइप से चेंज है। उसके बाद में ये 1981 में एक ये जो ग्राफ दे रखा है, ये इस टाइप से वेरिएशन हुआ है। और यहाँ पे क्या है, मतलब सेकुलर वेरिएशन हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी कनेक्टिविटी में चेंज होता है। मैग्नेटिक जो अभी यदि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड में कनेक्टिविटी में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या तो बोलते हैं क्रिप्टो कॉन्टिनेंट के करीब ये सब आउटर कोर और मेटल के बीच में डिस्टेंस है वहाँ पे। बेसिकली ये सब चीजें। हाँ, हेलो एवरीवन। Pavan, have you done? आई एम द ओनली, आप किसी और को भी डिस्टरबेंस फेस हो रही है क्या? हाँ, मुझे भी थोड़ा साउंड ब्रेक हो रहा है और स्क्रीन भी फ्रीज है। यस यस, सम प्रॉब्लम, बफरिंग कर रहा है। हाँ तो पवन, मे बी द इशू इन योर कनेक्शन। ओके, सो पवन, एक क्वेश्चन है इसमें कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस मेथड की है इसमें? हेलो? Yes, yes, I think Pawan left because of network problem. Anyone want to go for any method? Hello. अर्पिता हेलो? अर्पिता wanted to discuss about GPR and I मैं will मुझे discuss it tomorrow. Hello. ओके Hello. Yes, Vidut. Yeah. No, so Do you asking. want to? No. I'm not wanted. Actually, विद्युत your का voice वॉइस is बहुत लो है। very low, Wait, 1 minute. not properly audible. 1 minute. And Gauri, would you like to represent Yes, I will do it. which method? IP method, induced polarization. Okay. Amrit? नहीं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं इसीलिए पवन को बोला था ईएम करने के लिए।
मेरा थोड़ा इशू चल रहा है, 2-3 दिन ऐसा ही नहीं हो पाएगा। ओके ओके, विद्युत। Hello. No, no, Asudeep, I am also not prepared. So, Asudeep, hello. यस। या सो मतलब एक क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, मतलब तुमने जो पिछले दिन पूछा था ना, जो इलेक्ट्रोड सेपरेशन के साथ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का कितने मतलब क्या रिलेशन है, जो एक हाँ पवन का हाँ क्वेश्चन। तो तुम लाउरी में देख सकते हो, वहाँ पे एक फॉर्मूला है ना, जो फ्रैक्शन ऑफ द करंट गोइंग टू द default depth according to the electrode separation, that is Ix by I equals to 2 pi by 2 by pi into tan inverse 2z by L. मतलब in that relation you can get how much electrode separation gives how much depth of penetration of current. ओके ओके। एक्चुअली आई heard somewhere it is actually separation by 4. Is it correct or not? I am just confirming Separation by myself. 4, like this formula is, let's say, Ix by I, that means Ix is the fraction of the current that goes into the diff, right? So that is equal to 2 pi into tan inverse 2z by L. Here L is the separation between the electrode and Z is the depth of the penetration. Okay okay, so particular, okay, it depends on the amount of current which is limited. Okay. Yeah, limited, yes. One more question, can we arrange these methods as per the depth of investigation, including the seismic method, gravity, and the whole electric method and EM method? Anyone? I think possible, but I don't know. Actually, सबसे कम तो I think it is for the GPR. हाँ हाँ, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में ना पहला तो मैग्नेटिक टूलिंग मेथड थोड़ा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर। नहीं पवन, हाँ हाँ एक्चुअली हाँ, अब आप आगे हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस थे कि हाँ 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 हाँ। ईएम मेथड में ही जितने ही सारे मेथड, 3 मेथड है मेनली, सो उन्हें डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे उन्हें किस तरह? यस यस, डेप्थ जैसे कि अपन बात करें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसमें ना मैग्नेटिक टूलिंग में कम होती है, इन जनरल कम यूज करते हैं, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, उसके बाद में जीपीआर मेथड हो गया, सबसे कम जीपीआर में होता है। ओके, एंड अगर हम इसमें सिस्मिक और ग्रेविटी मेथड भी इंक्लूड करें फिर? पवन, आप एक बार तो रिपीट पहले हो करोगे गया, क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ ओके, आई कैन रिपीट। ओके, यदि अपन ग्रेविटी और उसमें ना उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ। पहला हो गया मैग्नेटिक टेलरिंग मेथड, वो ईएम जो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में मेरे पहला हो गया मैग्नेटिक टेलरिंग मेथड हो गया। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। उसके बाद में आता है सिस्मोलॉजी। उसके बाद में ग्रेविटी। उसके बाद में जीपीआर। जीपीआर सबसे लास्ट में आता है। और एक्चुअली आप बता दो, वॉइस आई थिंक ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब अभी भी वॉइस हो रही है, मतलब ब्रेक हो रही है अभी भी? अब सही है, बिल्कुल अब सही है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला होता है वो होता है मैग्नेटिक थ्योरिक मेथड। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। उसके बाद में सिस्मोलॉजी। उसके बाद में ग्रेविटी। उसके बाद में जीपीआर। जीपीआर में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली ये ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक one of geophysicists told me कि it is possibly asked कि हाँ, arrange the यस यस। methods as per depth of investigation from surface to center of earth. So GPR to MT, okay, ठीक है। And यदि डाउट, यदि मैंने आपको बताया था ना उसमें कुछ डाउट है? मतलब अगर ये जो आईपी मेथड है, अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो वो तो मतलब ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, डेप्थ ऑफ बेस बेस मेटल एक्सप्लोर करने के लिए है, वो अगर इंक्लूड करेंगे तो। हम मैं उसके बारे में पढ़ा नहीं है, आईपी की और एसपी को मैंने छोड़ रखा है कि आप लोग बताओगे ना। अच्छा, ओके। I will No take issue. हाँ यस Pavan, one यस more thing. यस। What is the basic principle of electromagnetic method?
इलेक्ट्रोमैटिक मेथड में बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो इलेक्ट्रोमैटिक वेव होते हैं उसको अपन प्राइमरी अपन जनरेट करते हैं पहले तो, और उसके बाद में जो वेव वो इंसर्ट करेगी अर्थ के सबसरफेस में, और वहां से जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, यदि कोई वहां पे कनेक्टिंग मटेरियल्स होगा तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी ईडी करंट जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन से, और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैटिक वेव जनरेट करेगी, और उन दोनों को अपन रिसीव कर लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक वेव को। और उन दोनों का फेज में क्या डिफरेंस हुआ है, यदि फेज में कोई डिफरेंस नहीं हो तो अपन बोल सकते हैं कि वहां पे सब सरफेस में कोई कनेक्टिंग मटेरियल्स नहीं है। यदि चेंज हुआ है, एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ है, तो वी कैन सी दैट कहीं ना कहीं वहां पे कनेक्टिंग मटेरियल्स है। ये उसका बस यही है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन उनका बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैटिक वेव उस मेथड में। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन है ना? यस 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 यस। ओके ओके, एंड एप्लीकेशन पार्ट? एप्लीकेशन पार्ट इसका भी इसमें यूज होता है, इसमें ग्राउंड ये ग्राउंड वाटर के लिए भी यूज होता है, बट रजिस्टिविटी के कंपेयर में ये ना रेजोल्यूशन अच्छा देता है इलेक्ट्रोमैटिक वेव और इलेक्ट्रोमैटिक सर्वे, रजिस्टिविटी के कंपेयर में ये थोड़ा रेजोल्यूशन अच्छा देता है, यही मेरे को भी तो याद आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। गौरी? Yeah. ओके, Yes. Shall I go ahead. present? Okay. So IP method is used in subsurface exploration cases where there is a chance of having a charge accumulation by means of polarization within the metal or on the inside the rock. This is the main. This is the principle which we are using in IP method. That is charge accumulation due to polarization. And here I have shown in this figure. First of all, the method we used in IP method is similar to that in resistivity method, where we will be using a pair of current electrodes and a pair of voltage electrode, and we can also use the different configurations like Werner Schrödinger, double dipole, all those configurations in IP method, but mostly in IP method it is based on double dipole. And when and apart from that, here we are also using not a continuous current, but the current is interrupted at a constant interval. So as I said, we can measure the amount of polarization within the subsurface. Here I have shown the voltage drop within the subsurface when a current is switched off immediately. Here you can see that the voltage is initially stable. Stable when the current is switched off, the voltage will drop immediately to a certain value, and after that it will decay slowly to zero. And here the small decay of time, decay of voltage to zero, which take a finite amount of time rather than the initial instantaneous decrease in voltage, is due to that polarization happening within the interior of the surface. And thus method of the polarization happening inside can be explained using two methods. First is electrode polarization, and other one is electrolytic polarization. And the figure I have shown here is showing the rock structure, which have continuous pores within it, and it is filled with electrolytes. And when we are applying a direct current through the current electrodes, the current will flows within the surface, and it will not, the flow of current through the electrolyte, that is the due to the movement of ions, will not be interrupted if the pores are continuous.
Let's assume the case that if there is a conducting material within the pores which is interrupting the motion of the electrolyte. That's what I have shown in the figure B, where there is a conducting material that is blocking the movement. Since it is a conducting material and and there is a current flow, this will create a polarization, and that is electrons will be aligned in one side and protons will be on other side. Thus there is a charge separation, and this charge separation causes a accumulation of positive ion on one side and negative ion on other side, and this creates a potential due to this polarization. This is what is called electrode polarization. And the second method is electrolytic polarization, and it is occurring due to two reasons. First is due to the constriction or the narrowing of pores. And the other reason is due to the presence of negatively charged clay particles within the pore spaces. And the first one I can, and in generally we can say that this is electrolyte polarization is also called membrane polarization, because in general this process have an effect to reduce the motion of or filter the reduce the motion of one particle when it compared to other particles. That is, negatively charged particles will be um, what is blocked from movement when compared to positive. And here I can explain the two ways. First one is due to the constriction in the pore spaces. Usually the surface between the um, rock and the electrolyte will be negatively charged. This causes an accumulation of positive positive ions in the electrolyte to accumulate over the surface. And when the areas where this pore spaces are constricted, this will cause a large accumulation of positive ions, thereby blocking the movement of negative ions through it. And the second method is due to the presence of clay particles within the pore spaces, which is indicated by the negative charge blocks within it. And this negatively charged block attracts the positively charged ions, and thus also isolating the movement and isolating and separating and causing restriction to the movement of negatively charged ions. These are the two methods that are responsible for the polarization happening at the subsurface, which is giving the IP effect. And next, we want to discuss is how this is measured. As I have discussed earlier, we will be using double dipole electrode configuration mostly, and here we will apply a direct interrupted current through this electrode, and the variation in the potential will be measured at the potential electrodes. And what and this the parameter we will be measuring in IP effect will be are of different types. And first one is chargeability, and it indicates how fast the potential is decaying or how slowly its potential is decaying. Or in effect, the chargeability indicates the area in the area under the decay curve by expressing it as a ratio with respect to the steady voltage V0. And we can analyze what sort of material is within the subsurface based on the area covered by this decay curve. For example, if there is a conductor, this decay curve will not die out easily. It will be elongated so that the area will be much larger. And whereas it is not a conductor, it will be the decay curve will be constricted, or it will decay fastly. And this area of this decay curve is also dependent on the frequency.
Before coming to that, so measuring the chargeability, we can define what sort of material, we can predict some information about the material inside the surface. And the second parameter we are measuring is called frequency effect. That is, I have told that told about the characteristic of the decay curve when there is a metal inside the subsurface. But the same effect of a conductor can be made by frequency change. That is, for a higher frequency, this decay curve will be greater, or it will cover more area, similar to indicating a similar presence of conductor. So by analyzing the frequency effect also gives us some sort of information from this. And this frequency effect is represented by this formula: Fe is equal to rho f minus rho capital F by rho capital F, where rho is the resistivity at two frequencies. Rho is the apparent resistivity, the same that we have been measuring in the resistivity method. And the frequency ranges will be taken as shown in the figure. The smaller frequency will be of the range 0.05 to 5.5, and higher frequency will be of the range 1 to 10 hertz. So in effect, at a higher frequency, there will be lower resistivity, and this frequency effect thus gives us some sort of information. And the third parameter that we will be measuring is metallic factor, which indicates the presence of metals, and it is indicated as given by the equation of MF is equal to, it is indicated as the difference in conductivities. And so we also used to measure the phase angle between the applied current and the decaying voltage. It is all this the parameter phi, phase difference, is also used as a parameter in IP to measure the IP effect within the subsurface. So there are in effect chargeability, metallic factor, frequency effect, and phase angle measurements. These all factors are being measured in IP effect. So in coming to the way we are calculating or measuring the or analyzing the data is, we will increase the distance between the near electrodes of near current and neighboring current and potential electrode, and this will be in an integer multiple of the spacing between the individual dipoles, that is spacing will be Na, and we will be representing it in 2 dimensions by changing the position of the dipole as well as changing the spacing between the neighboring current and potential electrodes. Here in this figure, I have shown the current electrode is between 4 and 5 points, and potential electrode is between 8 and 9. And for this particular positioning and the spacing, we will represent the value of apparent resistivity, or it is frequency effect, or its metallic effect, or its phase angle. Anything what we are measuring will be plotted at a point B, which is given, which is represented by drawing 45-degree line between the from the center of the each dipoles, current dipoles and potential dipoles. And for different spacing and for different positioning, we will describe the values measured at these positions, and it is represented by the figure given below. So the first figure represents the resistivity values. Second part of the figure represents the metallic factor, frequency effect. These all are being measured at different spacing and locations. And the next step is we will contour it. That similar values will be contoured, and next is, and after that
Next process is interpretation. We want to analyze which material, what sort of geometry is within the subsurface. So we will need to do interpretation. So one method is direct method, other is indirect method, as we have already seen. In direct methods, we will have some sort of geometries and its associated metallic factor, frequency effects, and phase factor, and all those things. And we will use to we will compare this with the two and um, uh, analyze the anomaly that is within the subsurface. And this is direct method. Indirect method is somewhat complicated. I didn't understand it well. It's about the that's all about the determination of anomaly within the surface. And the main application of IP method is mainly the detection of disseminated metallic ores, that is the scattered metallic ores rather than bulk, because this polarization effect is more is a surface effect. The more the surface, more will be the polarization. That's sort of relation. So if the ores are disseminated, it will have more surface area, so it will be mostly well studied than the bulk, presence of bulk ores. And it is also used used in metal sulfates cases, detection of metal sulfates, and in groundwater exploration and geothermal exploration. These are some of the applications of IP method. That's all about it. Gauri, Okay, yes. do you know about the pseudo section plot? What Yeah, is so the that? section is what I have explained in that. The way we are representing the measured values, that is apparent resistivity, or in that plot now, I will show it once again. This representation is called pseudoplot. These all are pseudoplots of resistivity, apparent resistivity, metallic factor, frequency effect. And we will contour that plot and analyze the anomaly. Okay, one more question. Here, which type of polarization is dominant, membrane or electrode? In case of this metal sulfates and all that, it will be electrode polarization. And in presence of clay, if the clay is mostly present, in that case, it will be electrolytic polarization. That's what I think. Okay. What is the order of the depth of investigation of this method? Sorry, I didn't know about it. I will search and tell. Okay, and limitation? Limitations. I maybe the same as non-uniqueness or that sort of thing. Maybe the one limitation, I don't know it. Okay, it is a limitation of all geophysical methods. Yeah. And I also some sulfates will not all sulfates will not show this IPFX. There are some which we cannot detect. So, is there any condition of polarization, induced polarization? I don't know that with respect to this separation. I don't know. It's mentioned in the book that sulfates, some sulfates, valerite, cinnabar, etc., have low conductivities
so it will not produce that much IP effect. I don't know the reason. And which type of variation we are looking here? Lateral or vertical? Both is possible. Okay. Hello? Hello. Gauri, can you explain that membrane polarization and electrode polarization again? Electrolytic and electrode polarization. That's what you asked, right? Yes. Okay. Uh, the first one, the electrode polarization is due to the presence of conducting electrodes, that is, which have free electrons within it. And second one is due to the Means how it contain the charge, means why its if there current is is free flowing electrode. in the electrolyte, right? We are applying induced direct current through the electrodes, so the current is flowing within the electrolyte within the pore spaces. When this is interrupted, that will create a polarization within the conducting part which is blocking it. Means we are measuring means after the means we are switching off that current na, that we are whatever charge build up that we are Yeah, measuring na. yeah. So the time So means what we are measuring is how that uh, how this charge will build up, means how it's act like a means capacitor type. that's what I'm telling. We are applying initially current. This current direction causes the polarization. Okay. Means we can apply it all type of mineral which contain electron, free electron. Conducting minerals within it. I think so. This was your doubt? Or Yes. Okay, Gauri, I have one question. Yeah. Can we polarize dielectrics? No, in effect, there will not be, in bulk, there will not be any polarization, right? Then it will not. Okay, In so what, dielectric, there is displacement within this atom, right? so what do you Here, understand by a dielectric material? What are the characteristics of a dielectric? in dielectric, there is only a slight displacement between this positive and negative charge within the atoms, right? But in conducting element, there is free electrons, so it can move apart and create a significant amount of polarization. That's Okay. what I think. Okay, which type of current we are using, DC or AC? We are using DC, similar to that electric method, and we are interrupting it. And also, we are, I can't say it's direct, it's low frequency AC, I can say, or alternating the direction so as to avoid the spurious charge formations at the electrode. So we can also use AC here. Low frequency is not is not AC. It's not varying. It's direct but alternating. And Okay. What do you understand by AC or DC current? yeah, in AC, it's the
voltage is varying at each time. But in DC, it will be a constant. Current will be applied. So Current is constant. here, or the order of the DC current is Order, you mean order means? I didn't get it. order means how much current we are using here. Generally, an approximate number. Sorry, I In the cannot recall. in microampere, milliampere, ampere, or more. Sorry, I cannot recall. Or I didn't see it anywhere. Sorry, I Anyone? don't know. Okay, no issue. Anyone? Anyone know the answer of this question? You can please explain. Pavan? हाँ ये मैं भी श्योर नहीं हूँ बट है ना मिली में हाँ वो करते हैं मिली एम्पियर Okay. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क गौरी. गोरी या गोरी चार्जेबिलिटी का फिजिकल मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इसका Chargeability, it indicates the resistivity in one way. The conductors which have low resistivity, it will decay only slowly. Thus, because there is more amount of polarization. As that is, IP effect is increasing, the chargeability is increasing. That is, the area within the decay curve is increasing. That's the significance. High chargeability indicates the presence, indicates a high IP effect. For non-polarizing materials, it will be very less than 1. The dimension of chargeability is time. It's in millisecond. Dimension is time. Yes, I am done. Yeah, okay. So, which principle of physics we are using here? Hello? Maybe it's a Ohm's law. Can we say polarization principle? It's a polarization effect, right? Yes, it is the polarization. I also some doubt. What is the basic difference between the dielectrical polarization and in the electrolytic membrane polarization and induced polarization? Both are the same and different. You are asking about dielectric polarization and the polarization happening here, right? Yes, yes, yes. Actually, here the polarization is not that similar to the dielectric. Dielectric, there is the effective positive sign is very the charge separation is so less, and this polarization effect is also very less due to slight movement of charges within the electrons atoms, right? Here the in conductor there is a separation between the positive and negative charges due to this current flowing.
the current we are applying. They are So not same. They are not same. The separation of charge is resulting in polarization, but the process is different. Conductor, they are and the free charge particles are free to move. But in dielectric, the movement is constrained within the atom itself, or there is only a slight displacement within the atom or of the charge cloud. so we can say that ki dielectric polarization produced by when we atom put in external electrical field and due to the separation positive and negative ions, and in which polarization by the when we put the current in the subsurface, then we have some positive and negative ions and separates. Yeah. Here Okay. conduction causes this charge separation. Okay, Gauri, can you classify materials based on the polarization? I don't know that. Sorry, I don't know. Is a water is a polarized molecule? Yeah, it's polarizable. Which kind of? Sorry, I cannot recall it. Can you ये do you इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन पोलराइजेशन होता है वाटर. I have studied it this somewhere, but I don't recall it. Water has highest dielectric constant, I think. It's almost 80. 81, yes. Yeah. Anyone? Gauri, hello. Yes. Yeah. So can you please explain how the phase angle, uh, how using phase angle you can describe the IP method? You have told, but please again explain. I don't know the details about it. Actually, there is a I don't know how. I think it's saying. I don't know. I cannot explain it. I have only get those ideas. I will send you a book and you can refer it. I cannot explain it at this moment. Okay. Which book you are using? It was some other name Reinhold. Applied and environmental geophysics or something of that sort. I think it contains some sort of that technical questions or slightly. I don't detailed, but I think the applications are also mentioned well and with examples. I think I will send that book in group. Okay, thank you. Okay, now move to the next method. So who will go for the we are remaining for the SP method. Huh? Anyone? Vidhu?
नो आसुदेव, आई थिंक और को बोले थे मतलब वो एसपी मेथड आज डिस्कस करेंगे, बट वो तो नहीं है। शानू, मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, मतलब इतना डिटेल बस डिटेल बिट कर सकता हूँ। हाँ हाँ, नो इशू। ओके, तो लॉरी से एक मिनट। Okay, my screen is visible, na? Yes, yes. Continue. Okay. Self potential means it is originated means it is spontaneous potential of the ground. And so for the self potential, the groundwater is a most important thing. And self potential is two means its origin. It is two type means it is mechanical origin also, and it is electrochemical origin. Okay. So it is the electrochemical origin and mechanical origin. So mechanical origin, it is means when electrolytic light is forced to flow in a narrow pipe, means in a pore space. If the ion is flowing, so then also there is a difference in viscosity and the electrical resistivity and pressure dependent the voltage will be generated. So this is the electrokinetic or the streaming potential. It is called also streaming potential. And next is the means which one, the electrochemical origin. So electrochemical origin, it is the means it is the diffusive potential, because if ionic concentration in the electrolyte it varies with the location, and the ion tend to diffuse through the electrolyte so that they equalize the concentration. So it is the mainly the concentration difference of the ion, and the ion try to diffuse from the higher region to lower region. Okay. Next important thing that the the next is the Nernst potential also. So this is the moment when the two identical electrodes are inserted in the ground. So variation in the concentration of the electrode cause the difference in electrochemical reaction of the electrode. So that is also called, this is also generated due to the Nernst potential. And next is the and so this cell potential act like a means it is a voltaic cell. So it is working as a battery. And so we are measuring. So we are fixed. We are measuring the mean voltage difference. So in a highly sensitive multimeter. So next we will do that how we are measuring the cell potential different area. And so this is the cell potential survey. So in SP survey, so there is two type of, one is the gradient method. So gradient method, we are fixing the two electrodes, so same spacing, we are maintaining same spacing. And
we are measuring continuously, and we also add it. And next is the total field method. So total field, we have a fixed station, means we are fixed, where base station is fixed, and we are several electrode we are measuring different position. So V1, V2. So mostly we are using the total field method because there is a less noise in this total electric field method. And so you can see here that this is the also one type of cell potential is generated. So this is the 150 minus 150, it is going on. So as the progress, and we are measuring several position. So we can draw the contour of the same potential. And so that much is given in earlier, that much I read. सानू, So tell me. या मेरा एक क्वेश्चन है, जो मतलब जो ग्रेडियंट मेथड होता है वहाँ पे क्यूमुलेटिव एरर बहुत ज्यादा होते हैं, बट हाँ 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 टोटल फील्ड मेथड में क्यूमुलेटिव एरर थोड़े कम होते हैं, मतलब ये कैसे कम होता है, ये थोड़ा means in explain gradient करेंगे? method we are adding the voltage na. So every time we are means every time we are adding error also. Okay, so that error part is if we are adding large number of electrode, so then its error will be more. But in a total field method, there is base station is fixed. Okay, there is common base station. So you can see that image also. We are the base station is fixed, and we are measuring the voltage and we are comparing it. So that's why its error is much less. And total field method is actually usable if there is no difficult terrain, means where we can't bring the large cable. That's why we are using the gradient method. Otherwise, if there is a terrain is plain or it's environmental friendly, then we are using the total field method. शानू, जो ये सेल्फ पोटेंशियल है अर्थ का, हाँ. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? So that's why I told you now that there is a two type of, means mechanical origin. One is mechanical origin and the electrochemical origin. Means different. Actually, mechanical origin, there is a difference in pressure, water pressure. So different type of, so there is ion generated na. So they are in a inside the earth. So there is a different rocks in different pressure. So there is pressure difference also in water bodies also. So that's why the ion movement also depends. So that's one the reason. And another reason is the electrochemical in origin. Means there is a chemical reaction also. That's why create the ion, like the means redox relation, the oxidation. Due to oxidation also there is generated ion. So that will be one of the reason of the cell potential. And which one is dominant? Mainly oxidation. Mainly oxidation is means due to electrochemical origin is more dominated. What is the order for of this potential? So this potential is millivolt. It is very less, and that's why we need very highly sensitive instrument. And another major drawback is sometimes we are getting the error also. Means It is very less, or the difference is very less? it is less also. Means it's we can maximum means it is 100 or 150 millivolt we can get up to. It's very less also. Means difference also will be very less. We are measuring from the actually we are measuring difference now. Voltage means we are
from base station to another station, another, so difference is very less. Okay. Sanu, Yes, any specific reason for opting the negative voltage for a Ori body? yes, Right. there is. So it is generally we are founding in negative. So there is reason. You know. So means whatever I read about that, that means as we are going deeper, na, at subsurface it's dry, so there is interaction with water is very less. But as the groundwater means as we penetrate inside the earth, so interaction with groundwater is little bit increasing. So that's why the oxidation is more at the lower part, and so upper part is oxidation is less. So that's why also we are getting more the negative ore. Ori It's cumulative two error. process na, the reduction and the oxidation. So reduction process is give the negative ion, na, and the oxidation is give the positive ion. So as we are going in deeper and deeper, so oxidation is increasing. Up to which depth we can measure using SP? Means it is water table up to water. What is the groundwater level that area? Water. What is the depth of water table normally in your It's area? depend If on. we consider Gangetic plain, then what should be the depth? No. It's even it's if Gangetic plain. It's also depend on the area basis. Means if it is close to river, then the groundwater level is be near to the surface, and if it away from the any water body, any large water body, then its groundwater will be little bit in a its groundwater layer will be deeper. I think if you will tell me Gangetic means it's maybe in 50 meter or less than 50 meter. Sanu, you are from which area? West Bengal. Okay. Okay. Sanu, ये cumulative error ये instrumental error या फिर any कोई specific reason है ये generate हुई है produce? No instrument. Actually, I have to little bit check on it. Otherwise, I will just guessing it's not work. Okay. When the instrument error is always present, but then also something else there. So, which law of physics we are using here? Law of physics. So actually, we are using like the when we are measuring the voltage, there is Ohm's law is using here, and another thing is And what is the instrument that we are using? so actually we are using the voltmeter. Means Okay. Okay. What should be the ideal characteristics of a ideal voltmeter? so ideal characteristic would be its means input resistance would be infinity, means high, very high input resistance, and Why? so otherwise it will voltage will be dropped na, otherwise in the resistance due to the resistance effect, internal resistance, and we are measuring a different voltage, means what other than the actual voltage. Okay. We voltage we use in which order
It is used in series or in parallel arrangement. In voltmeter, Yes. in voltmeter we are using the resistor in series. Okay. नहीं, जनरली जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम किस कॉन्फ़िगरेशन में मेजर करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए? There is high resistance. Means we are attaching the galvanometer with the high resistance in series. So that's why the current flow will be very less with that path. We will minimize the current flow. Okay, can we use any other instrument here? Means to measuring the voltage. So we are using the means high impedance digital voltmeter. So but we have to use the voltmeter. It's maybe digital or analog. How will you define analog and digital signal? So analog signal is continuous and digital signal is discrete. So that's we can differentiate. So and continuous means at a given value we get a particular output, but in a digital there is will be a gap. So in between gap we will not find the signal. So which one is better? In some case analog is better, and some cases mostly digital is better because for our purpose of using the filtering or all these things, and some case analog also using. Okay, what are the possible uses of SP method? So to find the means specific mineral which generate the means we from the SP method we know that the that mineral will be present. For the mineral exploration we can use it. Any specific type of minerals? I think sulfide means that is Yes. And the type of coarse type of materials, massive or disseminated. sorry I don't know what is the answer. It is massive I think or Massive sulfide bodies. yes. For IP, we the material the ore materials are in disseminated form. Gauri explained actually the reason. Okay. Okay. You mentioned about two types of potential. One is mechanical and another is electrochemical. Yes. In electrochemical, you mentioned about Diffusion. Nernst potential and diffusion. Uh-huh. What about mineralization potential? Mineralization potential also, Actually, yes. we are Yes. interested in mineralization potential. Is not it? Means
So they to mechanical what about mechanical origin? That is mostly with the environmental engineering. So there is a more important. But how the exploration, the mineralization, that we are it is background potential also. So mineralogy potential means cell potential associated with the ore body, na. It's not a separate potential. Cell potential maybe it's mechanical origin or electrochemical origin, na. Actually, in electrochemical potential, these mineralized potential comes. So we are interested in mineralized potential, and you mentioned about the possible sources, how this can be originated. So you actually explained well how these are coming from that oxidation concept. Pawan, do you know any better answer than that? Uh, Water level plays vital role. Other than that, Amrit, can you repeat your question? what are the possible sources of SP within the ground? One is a galvanized contact, then concept of pH difference, then water level, presence of water level, and the below region is oxidized, upper region is reduced. Eh, Is these three enough, or any other reasons are there? मेरे को पता नहीं है यार ये। अच्छा, ठीक है। और ये जो यूजफुलनेस है, इसका तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 50 मीटर जैसे बताया शानू, तो ये तो Means it ज्यादा depend on यूज। the water. It's depend अच्छा, on the water table now. Means it is not very much useful also. Means if there is a cell potential, then can we only use it. Otherwise, it not will be able to use it. आई थिंक इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जीपीआर से भी कम है। हाँ हाँ। यस। अच्छा, एसपी का डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन 30 मीटर के आसपास है। और जीपीआर का कितना है मतलब इन मीटर? पवन, जीपीआर का एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, बट बट एसपी का 10 मीटर 30 के 10 आसपास। मीटर के आसपास है। 10 मीटर है। जीपीआर का 10 है, हाँ यही है आई थिंक, बट श्योर नहीं एसपी हूँ। का बट एसपी का मैंने पढ़ा था 30 मीटर के आसपास है। तो एसपी है ना, ज्यादा डेप्थ पेनिट्रेशन ज्यादा है जीपीआर के कंपेयर में। अच्छा। तो रेजिस्टिविटी हो गया, एसपी हो गया, और आईपी भी हो गया। तीनों को अगर कंपेयर किया जाए, तो फिर रेजिस्टिविटी मेथड में हम लोग नॉर्मल रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं। एसपी में ये पोटेंशियल डिफरेंस, और आईपी में सभी कुछ मेजर किया जाता है, रेजिस्टिविटी, मेटेलिक फैक्टर। तो शायद इसी रीजन से आईपी अभी ज्यादा यूज होता है। और एक एक ग्राफ जो था, वो चारों कॉन्टूर एक ही रीजन में कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, वो वो एक्चुअली थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है मेरे हिसाब से। मतलब थोड़ा एक बार देखना चाहिए हम लोगों को। कौन सा ग्राफ? और गौरी ने जो बताया था, बताई थी कि
आईपी मेथड में जो जो मेजरिंग पैरामीटर्स है, जैसे कि क्या क्या मेजर करते हैं उसमें, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, मेटालिक फैक्टर और रेजिस्टिविटी भी आ जाता है शायद उसमें। Yes, तो वो apparent resistivity is also being measured. हाँ, तो आईपी एक्चुअली सभी कुछ कवर करता है, इसलिए शायद आईपी का यूज ज्यादा होता है अभी रेजिस्टिविटी मेथड्स में, मतलब इलेक्ट्रिकल मेथड में। और Gauri, can you answer these questions that why do we use dipole-dipole configurations only in IP? The reason I don't know it's sure, but according to me, there is a chance of um, that induction effect. If there is an electrode near to the place where the current is being is given as input, that may be the one reason. There are so many noises. Noises is there while we are measuring, but if there is presence of other electrodes near this current electrode, this may cause a induction effect or something like that, and this cause a noise. I think that may be the reason. This is what I assume from that noise. Also, depth of penetration also, na, means dipole is depth of penetration, I think, But higher. Na? but depth of penetration can be made much higher using Schrumberger also, right? Okay. Any more questions? Anybody can ask now to everybody. तो मतलब ये जो डाइपोल डाइपोल है स्लम्बर्जर है, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसके ज्यादा है? ये तो मुझे लगता है डाइपोल का ही ज्यादा है। हाँ, डाइपोल का ज्यादा है। तो उसके बाद एक है पोल डाइपोल। वो और भी ज्यादा है। अच्छा, Okay. Ashudeep, are you here? Yes. तो इलेक्ट्रिकल मेथड्स में ये तीनों मेथड हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो रैडर बाकी है। अभी और कोई कुछ प्रेजेंट करना चाहेगा या फिर क्या है अभी आगे का? तो बस सेशन आज से एंड करेंगे। आप पवन, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।